अब हम लोग चलेंगे मॉलिक्यूल्स और आयंस जिसमें बॉन्डेड पेयर्स के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हैं, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए बी एक्स ई वाई। ए सेंट्रल एटम, बी अदर एटम, एक्स इज द नंबर ऑफ अदर एटम, ई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वाई नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। तो फर्स्ट थिंग आपको ये दिमाग में रखना है, जैसे लोन पेयर आएंगे तो आपके पास रिपल्शन फैक्टर बढ़ जाएगा। जैसे रिपल्शन फैक्टर बढ़ जाएंगे, रिपल्शन की वजह से जो नॉर्मल जो स्ट्रक्चर होने वाला था उससे थोड़ा सा डिस्टोर्शन शो करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्टोर्शन बॉन्ड एंगल्स भी चेंज हो जाएगा। तो एक एक करके एग्जांपल लेते हैं। AB2E टाइप, जिसमें 2 बॉन्ड पेयर्स है और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। एग्जांपल चलिए, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड, less electronegative atom sulfur is central atom, so number of electron pairs sulfur 16, 6 electrons valence cell, other atoms 2 because contribution of oxygen is not included. Then we have 2, so we have 3 electron pairs present in the valence cell of sulfur. तो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, लेकिन या तो 2 अदर एटम्स हैं, सो 3 में से 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, इसका मतलब 2 बॉन्डेड पेयर्स हैं, तो रिमेनिंग 1 इज लोन पेयर। तो टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, उसमें से 2 पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, 1 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। अब जो कि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2 हुआ। अब यहाँ पे आपके पास डेविएशन इन द बॉन्ड एंगल, शेप, ज्योमेट्री डिफरेंट आएंगे। सो वी हैव दिस SO2, we have this S O, the third sp2 is occupied by lone pair। यही आपके पास लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर। अब यहाँ पे देखिए, इसका जो ज्योमेट्री है, तो sp2 ज्योमेट्री इज प्लेनर, बट आप लोग के दिस यहाँ पे हम लोग बताएंगे शेप भी क्या होगा। अब तक इसलिए नहीं बता रहा था, जिसके पास ओनली बॉन्ड पेयर्स है तो शेप एंड ज्योमेट्री दोनों आइडेंटिकल था। अब लोन पेयर की वजह से शेप और ज्योमेट्री डिफरेंट हुआ। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ज्योमेट्री मीन्स बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स का कंप्लीट अरेंजमेंट है, दैट इज ज्योमेट्री। शेप मीन्स ओनली द बॉन्डेड पेयर्स को रिप्रेजेंट करें। तो लुक एट दिस, ये लोन पेयर है, अब मैं बॉन्डेड पेयर्स को शो कर रहा हूं, तो बॉन्डेड पेयर्स समथिंग लाइक एंगुलर, वी शेप और बेंड। तो शेप इज वी शेप और बेंड, और इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर। अब कमिंग टू बॉन्ड एंगल, ये लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर, सर लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्शन 2, ये यहां से रिपल्शन करना शुरू करेगा। तो ये आपके पास बेंड है, यहाँ पे लोन पेयर इसके साथ रिपेल किया, लोन पेयर इसके साथ रिपेल किया, तो बिकॉज ऑफ रिपल्शन ये बॉन्ड एंगल थोड़ा सा फ्लिप कर गया, एंड बिकॉज ऑफ दिस ये जो बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 120, अब ये 120 से कम हो जाएगा, एंड इनफैक्ट दिस इज अराउंड 119 के आसपास है। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे डिफरेंट ज्योमेट्री शेप आया, एंड बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ये बॉन्ड एंगल जो थियोरेटिकल एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड एंगल है 120 उससे कम हुआ। तो दिस इज हाउ वी डिफाइन शेप एंड ज्योमेट्री। सेकेंड हम लोग चलिए AB3E टाइप, जिसमें 3 बॉन्डेड पेयर्स है और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। एग्जाम्पल चलिए NH3
और चलिए ClO3 माइनस एसेट्रा। तो अब हम लोग चलते हैं NH3। तो NH3 नाइट्रोजन, सो लुक एट दिस, यहाँ पे अदर एटम्स हाइड्रोजन है, तो इफ अदर एटम्स इज ओनली हाइड्रोजन देन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपके पास सेंट्रल एटम है। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इज नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन इज सेंट्रल एटम। सो देयरफॉर N/2 nitrogen group 15, so we have 5 electron, other atom 3, so we have 4 electron pairs present नाइट्रोजन के पास वैलेंसी शेल। अदर एटम 3 है, तो बॉन्डेड पेयर्स कितना हुआ 3, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, 4 में से 3 बॉन्ड पेयर्स में चला गया तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 बचा। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, सो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितना चाहिए होगा 4, एंड सो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ sp3। तो geometry will be tetrahedral but shape will be something different. So we have looked at this nitrogen, so we have hydrogen, 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 so this fourth position of tetrahedral will be occupied by lone pair, so this is NH3। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्री है, so geometry is tetrahedral but the shape of molecule is known as, इसको निकाल दिया जाए तो this forms something like pyramid। So shape is known as pyramidal, pyramidal shape। And coming to bond angle, sp3 थियोरेटिकल बॉन्ड एंगल होना चाहिए था 109.5। अब यहाँ पे सभी देखिए लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये इसके साथ रिपल्शन होगा, ये इसके साथ रिपल्शन होगा और ये इसके साथ रिपल्शन होगा। बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन, सो के दिस ये इस तरह से, यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे लोन, अब ये रिपल्शन कर रहा है, ये इसके साथ रिपल्शन, ये इसके साथ, बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन ये थोड़ा सा फ्लिप कर जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन नाइट्रोजन जो बॉन्ड एंगल है दिस इज 107, दैट इज ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। अब ये है दैट इज लेस देन 109 जो थियोरेटिकल वैल्यूज है उससे, तो एक्चुअल वैल्यू इज लेस देन थियोरेटिकल वैल्यू, रीजन इज बिकॉज ऑफ लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन। Same, you can take this example also, do it yourself। Next, take up this AB2 E2, we have this example H2O ClO2 minus। Let's take up this H2O water molecule। अदर एटम्स हाइड्रोजन है, तो ऑक्सीजन इज योर सेंट्रल एटम जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, ऑक्सीजन एज एन सेंट्रल एटम 16 ग्रुप 6 इलेक्ट्रॉन, अदर एटम्स इज 2, सो वी हैव 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अदर एटम्स 2 है, सो बॉन्डेड पेयर्स कितना हुआ इज इक्वल्स टू 2, तो लॉन पेयर 2। सेम यहाँ पे क्या मिलेंगे, क्लोरीन सेंट्रल एटम तो 7 + 1/2 to 4, अदर एटम्स ओनली 2। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए मुझे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तभी बनेंगे जब आपके पास 1s and 3p ऑर्बिटल्स मिक्स करेंगे टू गिव यू 4 इक्विवेलेंट sp3। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ,
तो look at this, we have this oxygen as a central atom. So दो bonded pairs हैं, so we say this is hydrogen, and these two will be occupied by the lone pair. So because of this, look at this geometry. So geometry is tetrahedral, but the shape will be something different. तो shape of this molecule, तो अगर इसको रिमूव कर दिया जाए तो this is बेल शेप और एंगुलर शेप. अब यहाँ पे देखिए लोन पेयर दो है. अब तक क्या था, लोन पेयर बॉन्ड पेयर था. अब वी हैव लोन पेयर रिपल्शन. तो थियोरेटिकल बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए, 109. बट यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है दिस कम्स आउट टू बी 104. तो दिस इज वी से ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन. सिंपली इसको हम इस तरह से लिखते हैं. सो वी हैव लोन पेयर है, वी हैव लोन पेयर. सो ये दोनों इतना रिपेल करेंगे कि इसके रिपल्शन, बिकॉज मैंने आपसे कहा था लोन पेयर हमेशा मैक्सिमम स्पेस ऑक्युपाई करने का कोशिश करेंगे. फ्री है ना, खाली दिमाग, शैतानी दिमाग तो होता ही है. इस तरह से अपने दिमाग को फैलाएंगे. जैसे इस तरह से जब स्पेस ऑक्युपाई करेंगे तो इनके बीच में स्पेस कम हो जाएगा, तो ये इसके साथ रिपेल करना शुरू करेंगे, ये इसके साथ रिपेल करना शुरू करेंगे, तो ये बॉन्ड एंगल फ्लिप कर जाएगा इस तरह से. तो जो कि लोन पेयर का जो रिपल्शन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो एंगल सबसे यहाँ पे कम हो जाएगा. तो है तो आपके पास sp3, लेकिन यहाँ पे डिस्टोर्शन शो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस रिपल्शन. सो जहां पे भी रिपल्शन आएंगे डिस्टोर्शन शो करेंगे. तो यहाँ पे डिस्टोर्शन शो किया. तो ये आपके पास AB2 E2 टाइप. अगर हम इसको इस तरह से देखा जाए, AB E3 type, and we can take this example ClO minus. So this is your central atom. ये central atom है. So n/2 17 group 7 plus oxygen is 0 plus we have negative charge plus 1 divided by 2. So we have 4 electron pairs. Other atoms 1 है, so we have 1 bonded pair and the remaining is lone pair. Hybrid orbitals कितना चाहिए होगा, 4 hybrid orbitals required. तो hybridization is again sp3, but only one bond present है. So look at this, we have this Cl. So let this be O minus. So this is electron pair, this is electron pair, this is electron pair. So as it is geometry, so geometry will be tetrahedral, but the shape क्या हुआ, ये सभी तीनों को रिप्लेस कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो शेप इज लीनियर. बोन एंगल कितना हुआ, दो कंबाइनिंग एटम Cl है, डिस्टेंस कितना हुआ 180 डिग्री. तो दिस इज द डिस्टोर्शन है. तो जहां पे भी आपके पास आएंगे ये डिस्टोर्शन शो करेंगे. तो दिस इज with lone pair electrons. Now coming to some other categories, AB4E type. AB4E type, and the best example is SF4. So look at this, SF4 sulfur is central atom, so N/2 16 group 6 electrons, other group 4/2 5 electron pairs. तो 5 electron pairs है. Other atoms is 4, so bonded pairs is 4. So lone pair 1,
टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर इज 5, सो वी रिक्वायर 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का रिक्वायरमेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d। तो sp3d 5 इक्विवेलेंट बनेगा। तो नाउ लुक एट दिस, ज्योमेट्री इज triangular by pyramidal geometry and the center will be occupied by S. So we have two possible arrangement है। In one of the case look at this, lone pair electron में यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखा, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन। सेकेंड lone pair axial position, we have फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन। ये दो पॉसिबल है ना, दोनों में कंपेयर करते हैं ना। यहाँ पे दी लोन पेयर बोन पेयर 90 डिग्री, तो लोन पेयर बोन पेयर 90 डिग्री, कितना रिपल्शन है, 1 2 3 रिपल्शन है। अब इसमें चलिए, लोन पेयर बोन पेयर 90 डिग्री रिपल्शन, 1 2, दिस इज 120। so now it is 90 डिग्री लोन पेयर बोन पेयर रिपल्सन इसमें ज्यादा है, इसका मतलब दिस इज लेस स्टेबल। तो कहने के मतलब ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, whenever we have lone pair electron, lone pair will always occupy equatorial position. तो geometry is trigonal by pyramidal, but the shape is known as शीशो शेप। तो लुक एट दिस, ये इसके साथ रिपल्शन करेंगे, ये इसके साथ रिपल्शन करेंगे, तो ये स्ट्रेट होना चाहिए, थोड़ा सा बेंट हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस ए शेप ना, शीशो शेप तो खेलने वाला वो शेप बन जाएगा। तो यहाँ पे जो पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, इन ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ज्योमेट्री लोन पेयर ऑलवेज occupy equatorial position to minimize 90 degree repulsion. Then we can have look at this AB3 E2 type take this ClF3 BrF3 IF3 etc. So let's take up this ClF3, less electronegative Cl is central atom, so n by 2 17 group 7 electron valency cell plus 3 divided by 2, so we have 5 electron pairs in the valency cell of central atom chlorine. Number of other atom is 3, so bonded pairs will be 3, lone pairs will be 2. ये केस है। इलेक्ट्रॉन पेयर इज 5, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, so hybridization is again sp3d type, that is trigonal bipyramidal geometry. So we have Cl. Now अभी जस्ट मैंने आपको शो किया ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, लोन पेयर हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे, सो दीज टू लोन पेयर ये ऑक्यूपाई करेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन and rest of the position is occupied by fluorine. So geometry
is ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बट द शेप क्या होगा, इसको रिमूव कर दिया जाए तो दिस बिकम्स टी शेप. तो शेप इज टी शेप, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. We can have AB2, E3, example I3 minus, BR3 minus, ICl2 minus, etc. So let's take up one of this example, I3 minus. So we have three iodine. All of these three iodine, one will be central atom, other will be the other atom. So n by 2 of central atom, iodine 7. So 1 is considered as the central atom, the remaining 2 is considered as other atom. We have a negative charge, so plus 1 by 2. So we have 5 electron pairs. Other atom is 2, so we have 2 bonded pair and 3 lone pair. Total orbitals required is 5 orbitals required. Hybridization is sp3d. So the geometry is trigonal bipyramidal, but the shape will be something different. So let's define the shape. So we have I here. Now lone pair will occupy equatorial and the rest of the portion will be occupied by I. So this is I3. So geometry is trigonal bipyramidal, but if you look at the shape क्या होगा, this is linear shape. तो यहाँ पे bond angle 180. So this is the distortions. Then coming to next category, AB5 E type. Example IF5, BRF5, etc. Take this BRF5. Less electronegative atom, bromine, central atom, so n by 2 is 17 group electrons in the valency cell plus 5 by 2, so we have 6 electron pairs. Other atom is 5, so bonded pairs is 5, lone pair is 1. Number of orbitals required is 6 hybrid orbitals, so the hybridization will be sp3d2. So the geometry will be octahedral, but shape will be something different. So we have Br, less electron pair है, so rest of the position is fluoride. So geometry is octahedral, and but the shape we have to exclude. So this forms square pyramidal. Square pyramidal shape. So this is AB5 E type. We can have some more combinations here. AB6 E type. So the base example is XEF6. XEF6. This is central atom.
So n by 2, 18 group, 8 electrons, 6 other atoms, so we have 7 electron pairs. Other atom is 6, so we have 6 bond pairs, so we have 1 lone pair. Hybrid orbitals required is 7, so hybridization is sp3d3. So the structure should have been pentagonal bipyramidal, but experimentally it is found to be distorted octahedral. So please keep in mind. And the lone pair electron is pointed along the centers of any particular edge. So this is distorted octahedral. So these are some of the possible combinations of molecules or ions having lone pair electrons. So by this we can easily construct the shape, hybridization, geometry, number of bond pairs and number of lone pairs. So I am giving you just how to apply this in. So we have a question here. So we have XEF2, XEF4, XEF6. So we have to find hybridization, lone pair, bond pair, as well as shape geometry. Central atom is X. To n by 2, 8 plus 2 by 2, so we have 5. 8 plus 4 by 2, we have 6. 8 plus 6 by 2, we have 7. To bond pairs is 2, lone pair 3. So central atom has got 3 lone pair. Bond pair is 4, lone pair is 2. Bond pair is 6, lone pair is 1. So we can easily construct, if question says arrange the following molecules in increasing order of central atom having lone pair. So 1 lone pair, 2 lone pair, 3 lone pair, we can easily define. Geometry is XCF2, 5, trigonal bipyramidal, 6 octahedral. This is distorted, distorted octahedral. Geometry, so we have 2 atoms, 3 lone pairs, lone pair occupying equatorial, so this is linear. Lone pair occupying, so this is square planar. This is distorted octahedral. So इस तरह से we can easily compare कि calculation of central atom में how many electron pairs, how many lone pairs, lone pair increasing order, decreasing order, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं. One more example मैं आपको दे रहा हूँ. ClO minus, ClO2 minus, ClO3 minus, ClO4 minus. In सभी में central atom is Cl, so we can define n by 2, 7 plus 1 by 2, 7 plus, because oxygen contribution is 0, 7 plus 1 by 2, 4, 7 plus 1 by 2, 4. Bonded pair 1, lone pair 3. इसमें hybridization, let me give you the hybridization. This is sp3d, sp3d2, sp3d3. Bond pair 2, lone pair 2. Bond pair 3, lone pair 1. Bond pair 4, lone pair 0. Geometry tetrahedral, 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 tetrahedral.
shape, it is linear, shape is bent, that of water molecule. This is pyramidal, similar to that of ammonia molecule. This is tetrahedral. Hybridization, sp3, sp3, sp3. So by use of this we can easily define. So this is how we define shape, structure, geometry, bond angle, number of lone pair electrons, number of bond pair electrons. So this is all about the molecular structure or shape of molecules based on VSEPR theory. So by use of this we can easily predict the shape or geometry of any molecular species or ionic species, provided we know the steps that I have shown you. So very easy to define. Thank you.